We will start. Let the others join. Till then, we will quickly revise. In the last lecture, we have started functions in C++. I hope I am clearly audible. If in between I am not audible, then please tell me. Okay? Unmute your mic, tell me. कि मैं यहाँ से वापस मैसेजेस में नहीं चेक कर सकती ना, तो आप वहीं पे अनम्यूट करके माइक मुझे बता दो. In the functions of C++, we studied these points. Among these, which one we have completed? The basic syntax of the function. What do you mean by function declaration, function call, function definition, function body, which is almost similar to that in C. Main function in C++, basically two prototypes are used, but the most commonly used is this one. The main function in C++ always returns int type value to the operating system at the end, and hence this statement becomes important to be written at the end of the main function. It signifies that the program has run successfully. This is another prototype which you must be familiar with, though we are not going to use in this your course in most of the programs that are part of your course. But you must know this, that this is another prototype used in C++ for main function. Int main, int argc, char star argv, where first argument is the number of arguments passed from the command line to the main function, and second argument is the pointer array of character values. So char type pointer array, which will store those arguments. Function prototyping. Prototyping is nothing but the function header. Means what you must write while declaring the function. So you must mention number of arguments, types of arguments, type of return value. This is the return type of the function. This is the function name, and here the argument list comes. Why we provide function prototype? Because compiler will check this template at the time of function call. Okay, and then it will place that function call. So it is like an interface between it is like an interface between the program and compiler. These are some of the examples of the function calls and how function prototype is given. Inline function, in line, the word itself signifies that when the function is expanded or invoked there only whenever the function call is encountered. So the body is expanded there only, and no function call overhead mechanism is there. So function call hona means the control passes to the function where it is being called, then the lines of code of that function body executes, and then the control comes back to the inside the calling function. So this overhead is minimized in case of inline function. यहाँ क्या होता है कि वहीं पे drop down होती है उसका code or whatever the function body of that inline function, and then that function is executed. So no passing and control and coming back mechanism, function call mechanism is involved in case of the inline. So what we have to remember is only make those functions as inline which are smaller, one or two line functions like this, because they will be easy to be expanded inline and they won't cost you the memory space in the program. Simple program we have learned. Default arguments means the argument which is initialized at the time of function declaration, and which we think that it will be common for most of the function calls. So we make such one of the argument or two of the arguments as default argument. You can have any number of arguments as a default argument. Look at this example.
In this, three arguments are given, but this one is the default argument. How the default arguments are written? Float, return type of the function, amount, name of the function. How many arguments you may see? First है float, principal. सेकेंड है int टाइप का पीरियड वेरिएबल और थर्ड है float टाइप का रेट वेरिएबल. बट हियर ओनली आई हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू 0.15. ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी इसका अमाउंट कैलकुलेट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉमन रहेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल इनिशियलाइज इट हियर ओनली so that every time the function call will be placed, I have to pass only two arguments and not this one, because compiler will assume this value by default because it is already initialized at the time of function declaration. Okay, so that's why whenever you call these such functions, you can pass only two values. So this is a valid function call. What about this function call? Is it valid or invalid? ये फंक्शन कॉल भी वैलिड है. अब यहाँ देखो क्या होगा. When you write amount in bracket 5000, 5, 0.12, so the first value जो है ना ये जाएगी principal में. See this, I will change the color. It will be red. Okay, this 5000 value goes to the passed to the principal. The second value 5 is passed inside the period. But what about this value? ये तो default value है इसके पास, लेकिन फिर भी आपने यहाँ value लिखी, तो ये जो value है ना ये override. मैम पीपीटी दिख नहीं रही. If it is not visible, वाइट स्क्रीन आ रही थी. वो मैम वाइट स्क्रीन आ रही मैम. okay, wait. I will again press it. ये कॉलेज के सिस्टम में ऐसे ही प्रॉब्लम होता है. टुडे आई एम टेकिंग लेक्चर फ्रॉम कॉलेज. आता पहा दिसत आहे का? हो मॅम आता दिसत आहे. सगळ्यांना दिसत आहे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now look at this. What will happen in this case? 5000 goes to the principal value. Second argument passed period, second value, and this value will be overwritten. Means, sorry, the default arguments can be overwritten. Okay, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर की केस में ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए और बाकी अगर आपके पास 1000 कस्टमर है तो 1000 कस्टमर के लिए अगर ये वैल्यू रहने वाली है और सिर्फ एक किसी कस्टमर के लिए ये वैल्यू रहने वाली है, सो यू कैन गो फॉर द डिफॉल्ट आर्गुमेंट यूज. और सिर्फ उस कस्टमर की केस में आप क्या करोगे, ये फंक्शन यहाँ एक्सप्लिसिटली वैल्यू पास करके एग्जीक्यूट करोगे. ओके, सो दिस इज ऑल्सो परमिसिबल. सो डोंट से दैट दिट इज काइंड ऑफ इनवैलिड फंक्शन कॉल. ओके, is a default argument function call. It is also valid because the default arguments can be overwritten. Okay. The, this value. तो यहाँ 0.50 value consider नहीं होगी, यहाँ 0.12 value consider होगी for the rate, and then the amount will be calculated. Default argument में आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि initialization, in which way the initialization is permitted and not permitted. So see, whenever you initialize the value, it should be always from right to left direction. Means if I want to initialize the value, see in the first case what I have done, rightmost value है k, उसके बाद है j और फिर है I. So I can have k with the value 10, initialize j with the value 5, and I as it is. Okay, I have not initialized any value to this one. I made j and k default argument. This is illegal thing, because you have initialized the value from right to left and you have stopped somewhere. Okay, you have not, you don't want to initialize, so you kept it as it is. Okay, which is not going to, it is going to be the general or normal argument.
What about the second case? In k is equals to 10, in j and I is equals to 0. So you left out the j while assigning in between. आपने यहाँ से initialize start किया और आपने इसे skip किया और directly यहाँ ही. So this is illegal. I always go from right hand side to the left hand side while you're assigning the values. What about this case? Is this legal or illegal? This is illegal because you have skipped the j, the rightmost argument, and you have directly initialized the leftmost argument. So this is actually looking like a left to right, okay, which is not legal form to be initialized. Then what about this? You have made all the arguments डिफॉल्ट आर्गुमेंट. तो इसमें आपने फंक्शन कॉल जब करोगे आप तो सिर्फ आपको इंट एमयूएल ही कॉल करना है. बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू 2, इसकी 5 और इसकी 10 रहेगी. वैसा हम बहुत कम चीजों में करेंगे. जैसे अगर आपको पता है कि सेम ही किसी चीज का कुछ कैलकुलेट करना है, कोई कैलकुलेशन पार्ट है और जिसमें आई जे के की वैल्यू यही रहने वाली है, सो यू कैन गो विद दिस फॉर्मेट. बट दिस इज जस्ट टू टेल यू दिस वन एग्जांपल इज रिटन, not going to be used most of the time, such kind of. So that was about the default arguments. The advantages of default argument is that कि देखो प्रोग्रामर जो है वो जो मीनिंगफुल आर्गुमेंट्स है उन्हीं के साथ डील करेगा. ठीक है, एवरी टाइम उसको वही वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी जो चेंज जिनमें चेंज होता है. दैट इज वन केस. और इससे हमारा जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो हम सिंटैक्स दैट ओवरहेड विल आल्सो गोइंग टू बी रिड्यूस्ड because you have to just mention the general arguments and not the default arguments. Now let's move on towards the recursion. I hope you have studied this topic in C language also. Let's have a quick revision with the program in C++, how the recursion is performed. So it is a situation where function calls itself. So the function calling itself again and again, that is known as a recursive function. And a recursive function तो वो तो फिर घूमता ही रहेगा, राइट. इट विल बी काइंड ऑफ इनफाइनाइट लूपिंग. तो इसीलिए रिकर्सिव फंक्शन को हमें उसमें से बाहर आने के लिए एक बेस केस प्रोवाइड करनी पड़ती है. ये बेस केस वो रहेगी जिसे चेक करके फंक्शन कभी तो बाहर आएगा. ओके, सो एवरी रिकर्सिव फंक्शन must have a base case. I hope you are having your copies and pen with you. You're noting down the things. So Yes, a ma'am. recursion function must have a base case which returns the program control back to the calling function. मतलब अगर कोई फंक्शन इसे कॉल कर रहा है रिकर्सिव फंक्शन को तो ये इनफाइनाइट लूपिंग में नहीं जाना चाहिए. इसलिए उसमें एक ऐसी बेस केस होती है, मतलब एक टेस्ट होती है, एक कंडीशन होती है जहां वो चेक करके उससे बाहर आ सके. So let's try to understand the program of factorial using recursion. We have already performed the program of factorial without using recursion also in the first unit, but here you will see program of factorial using recursion. Okay, because see students, there are hundreds of ways to write a same program. ठीक है, कोडिंग चेंज हो सकता है. मे बी द यू आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम यूजर, यू आर नॉट टेकिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर. इसमें आप मे बी कुछ अलग कंडीशन डाल रहे हो, फिर भी it may be there is multiple ways of logic to reach to the same to get the same output. ओके, मल्टी अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं. सो इट इज नॉट दैट कि यही प्रोग्राम सभी तरफ यूज होगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए. अगर किसी को फैक्टोरियल बोला जाए तो वो रिकर्शन यूज कर सकता है, सिंपल प्रोग्राम कर सकता है, कोई सी में. देयर आर मल्टीपल ways to write a program. Okay, there are multiple ways to somehow the common things will be there. Okay, but the logic may see this program. अभी हम इस प्रोग्राम को देखें. Let me change. Hope I am audible to you because there are so many lectures around going on. So is there background noise? कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ ठीक है. क्लियर है मैम. So let us see. Hash include IOStream, header file, using names to std. I hope you are familiar with these things by now. So let's move on towards the logic of the program. What I have done before starting the or writing the main function, I have declared at the top that this function I am going to use int return type factorial name of the function, and one argument it will be passed with, that is going to be of type integer.
I hope you know the factorial, how it is calculated, right? The factorial of 1 is 1. Factorial of 2 is 2 into 1. If you know this thing, you will be able to imply the logic also. ये already बताया है मैंने. Factorial of 3 is 3 into 2 into 1. Factorial of 4 is 4 into 3 into 1 and so on. What we are going to calculate, we will take the input from user side and then we will calculate the factorial of the number that user wants. ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम में फ्लेक्सिबिलिटी रखी है. यूजर अपने मन की कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से वैल्यू यहाँ यूज एंटर करेगा और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होना चाहिए प्रोग्राम में. So remember students, whenever you are writing the main function, before that you must declare the function that you are going to use inside the main function. Otherwise, here the syntax error will occur. Or what is factorial of n? The compiler will give you an error. ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम एरर आ जाएगा कि फैक्टोरियल पता नहीं है. लेकिन अगर आप मेन लिखने से पहले ये डिक्लेयर करके रखते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये पता रहेगा कंपाइलर को कि ये किसी फंक्शन का नाम है जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है. सिर्फ उसे वहां उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, automatically pass you. So let us look at the logic. तो सबसे पहले हमने ये function declare कर दिया. उसके बाद inside the main function what I'm going to write one variable. उसके बाद इसमें हम ये वैल्यू लेंगे यूजर से, इसलिए मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया. इसके बाद मैंने एक यूजर को मैसेज प्रॉम्प्ट किया कि एक पॉजिटिव नंबर एंटर करे. फिर वो वैल्यू यूजर एंटर करेगा, इसलिए स्कैनफ फंक्शन का रिप्लेसमेंट क्या है C++ में cin से हम वैल्यू लेंगे यूजर से थ्रू कीबोर्ड. उसके बाद हम यहाँ मैसेज डिस्प्ले करेंगे फैक्टोरियल ऑफ, एज इट इज डिस्प्ले होना चाहिए फैक्टोरियल ऑफ. उसके बाद ये नंबर आना चाहिए जो यूजर ने एंटर किया, इसलिए यहाँ n लिखा है विदाउट कोट्स. उसके बाद ये इक्वल्स टू सिंबल एज इट इज आना चाहिए और फिर ये फैक्टोरियल ऑफ n फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, वो ये वैल्यू यहाँ आनी चाहिए. ओके, और उसके बाद रिटर्न 0. सो दिस इज द मेन फंक्शन आई हैव कंप्लीटेड. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू डिफाइन माय फैक्टोरियल फंक्शन. जो मैंने यहाँ सिर्फ डिक्लेयर किया था, अब मैं उसे यहाँ डिफाइन करूंगी. ओके, as you can see this is the function. मैम वो आर्ग्यूमेंट की स्लाइड चालू है. कौन सी आर्ग्यूमेंट की स्लाइड? हाँ अब आ गई. फंक्शन डिक्लेरेशन. मैं कभी कमेंट लाइन है, ये कोई सिंटैक्स नहीं. दिस इज द कमेंट लाइन हाउ यू राइट प्लस प्लस. दे डोंट मीन एनीथिंग, दे आर नॉन एक्सिक्यूटेबल. See, what is the logic implemented here? See, we know that factorial of 1 is 1, and when we reach by subtracting the values from that number till 1, we have to calculate the result up to this number. What result? Multiplication result. So what I am going to write my logic as, if n is greater than 1, then multiply that number with its minus 1 factorial. But if the number is less than 1, means is equals to 1, then it has to return 1. What is going to happen in this case? When you pass the value 6, see this logic, we can run this for the help of iterations, as you have been taught in the C programming languages also how the iterations work. First iteration, second iteration, what's the value of how the value of n changes, and that everything. See here. Is the very first iteration will go by the value when the value I have passed, suppose 6. Okay, when the program has started execution, enter in positive integer. जैसे मैंने यहाँ 6 पास किया तो n में वैल्यू गई 6 और फिर उसके बाद ये जो है पास होगा 6 और 6 के लिए ये फंक्शन रन होगा. अब ये कंडीशन जो है फर्स्ट इटरेशन में चेक होगी. कंडीशन आपकी ट्रू है क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये स्टेटमेंट रन होगा. रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n. इसका मीनिंग ये है कि रिटर्न 6 इंटू factorial of
5. Okay, and then again what will happen? You are calling the function again, the recursive function. When the function is calling itself again the in its own program body, then it is known as a recursive function. यहाँ क्या होगा? Second iteration आएगा, but इस बार n की value होगी 5. Again the condition will be checked. 5 is greater than 1, yes. Hence your this line will run. Return 5 into f of factorial of 5 minus 1. Again, third iteration will take place. Again, the function is calling to itself, but this time for the value 4. Now, 4 is greater than 1. Yes, the condition is true. Again, this line will run. Return 4 into factorial of, and so on, we will reach up to the 1. And somewhere, when your n will be equals to 1, n is greater than condition greater than 1 false, because 1 is greater than 1. This condition is false. 1 is not greater than 1. And hence the else statement will run. That is return 1. ये जो 1 है ये यहाँ रिटर्न होगा f of 2 में, उसके बाद ये स्टेटमेंट ऊपर रिटर्न होगा. So 1 into 2 will be returned to the f of 2. Then f of 3 will be returned to this f of 4. So 6 will be returned here. And then f of 4 जो है that 24 will be returned as an f of 4. This value here 24 into 5 इसका जो टोटल वैल्यू है ये रिटर्न होगा यहाँ of 5 will be 120 I guess. And ये पूरी वैल्यू फिर इसमें आपने से कॉल किया था 120 into that will be written as an output is. So just go for this. Just have the iteration number, the value. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? Iteration number लिखो, ठीक है? एक कॉलम, दूसरा कॉलम रहेगा वो the value of n is equals to, तीसरा रहेगा condition true or false, और चौथा कॉलम आपका रहेगा कि how the calculations are getting performed. So you already know these things. You must have performed the recursion in your C languages also. Let's look at the next concept, function overloading. As I've already told you, what is function overloading? Is that when we use the same function name to perform the different task. Okay, same function name but different task. और ये हमने पढ़ा था polymorphism में. So this is known as function polymorphism. The same thing we do with operator also. Operator overloading भी होता है, function overloading भी होता है. यहाँ हमको function सेम फंक्शन नेम रखेंगे लेकिन अलग अलग टास्क उससे रन करेंगे. जैसे हमने शेप फंक्शन देखा था, फंक्शन का नाम शेप ही था, लेकिन जब उसको ऑब्जेक्ट सर्कल ने कॉल किया तो उसने सर्कल ड्रॉ किया. जब ट्रायंगल ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो फंक्शन ने ट्रायंगल रन किया. और जब रेक्टेंगल सब ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि तीनों फंक्शन के नाम सेम होते हैं लेकिन उनमें डिफरेंसेस किस चीज के होते हैं? सो द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स पास्ड टू दिस. ओके, तो इसके बेसिस पे कंपाइलर उसे आइडेंटिफाई करता है क्योंकि नाम तो सेम है तो उससे कुछ तो डिफरेंशिएशन लगेगा. सो दिस इज व्हाट द थिंग दैट डिफर्स अमंग द फंक्शंस विद सेम. We will understand this with the help of example. See, यहाँ क्या होता है? कंपाइलर ट्राइज टू मैच द प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप आपने पढ़ा है. ओके, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स ये सब मेंशन होता है फंक्शन डिक्लेरेशन में. तो यहाँ देखो, आप देख सकते हो कि फंक्शन का नाम ऐड ही होगा. ठीक है, यहाँ मैं अभी जितने भी फंक्शन लिखूंगी सबका नेम जो है ना वो ऐड होगा, लेकिन उनका रिटर्न टाइप, उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और उनके आर्गुमेंट्स के डेटा टाइप अलग अलग होंगे. ठीक है, तो you'll have to be careful when you are overloading the functions that you have to keep the name same but you have to differ, make them differ in these cases. That is number and type of. Look at this. ये जो सेम कलर में आपको दिख रहा है ना, उनका जो ये है वो सेम है. दैट इज द प्रोटोटाइप. द प्रोटोटाइप ग्रीन कलर ये आप अभी देख सकते हैं. अगर ये मैं आपको मैच द पेयर के फॉर्म में टास्क दे सकती थी बट यहाँ मैंने फिर कलर्स यूज किए हैं. ठीक है, यहाँ जैसे कि मैं आपको बोलने वाली थी कि बताओ इसके लिए कौन सा फंक्शन कॉल होगा. दैट वाज द टास्क.
executed in the last year teaching this concept, but this time I have just used the colors, and you'll be able to identify which prototype, which function call matches with which prototype. Okay. Now see here, the very first int add, how many arguments? Two arguments are given. Okay, this is the first prototype. अब second function भी मेरा add ही है, उसका return type भी int है, लेकिन यहाँ number of arguments कितनी हो गई? 3 हो गई. भले पहली दो सेम है, लेकिन यहाँ तीसरी जो है वो different हो गई है. And remember, students, you can use the same variable name also. It doesn't matter because the function will be treated as a different one. Then double add the blue colored one. Okay, इसमें return type change हो गया है, plus दोनों arguments का data type भी change हो गया है. तो इन दोनों में prototype 1 और 3 में आप एक चीज common देख सकते हैं कि दोनों के जो arguments है, number of arguments वो 2 है. Okay, but the data type of both the arguments is different. How compiler will be able to differentiate. And last one, यहाँ written type अलग है, double P and double Q. Written the same. You must take care of by making the functions. Now I have differentiated. नहीं तो ये दोनों सेम फंक्शन हो गए थे मेरे. So double add double p and integer. Now I have changed the type of इसका कोई तो डिफरेंस होना ही चाहिए जब आप फंक्शन. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि एटलीस्ट उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या उनके टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स में कोई ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जिससे कंपाइलर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. जब हम कॉल करेंगे यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे आपने पहला देख लिया यहाँ पे 5 10 मतलब दोनों एक टाइप की वैल्यू है, एंड हेंस द फंक्शन कॉल इट मैचेस द प्रोटोटाइप. सेकंड इसमें आप देख सकते हो कि पहली वैल्यू जो है इट इज काइंड ऑफ अ फ्रैक्शन वैल्यू, सेकंड इज ऑफ टाइप इंटीजर वैल्यू. सो दिस ऑब्वियसली मैचेस विद द फोर्थ प्रोटोटाइप व्हाइट कलर. द थर्ड फंक्शन कॉल मैचेस विद द ब्लू कलर्ड फंक्शन प्रोटोटाइप. एंड दिस वन पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू तीनों इंटीजर वैल्यूज हैं. Say that this one matches like orange color. Now function selection जब compiler side में होता है तो what compiler actually does. So compiler performs goes step by step. First it tries to find the exact match जहाँ पे उसके actual arguments number of arguments same है. अगर उसमें मैच नहीं फाउंड होता सेकंड स्टेप में. सेकंड स्टेप में क्या होता है, इंटीग्रल प्रमोशंस होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट जो प्रमोशंस होते हैं ना लोअर टू हायर डेटा टाइप, दे आर default conversions and they are permissible. Okay, by default the compiler can do this conversion, लेकिन हायर का लोअर में नहीं होता है, उसके लिए आपको कास्टिंग यूज करना पड़ता है. बट लोअर डेटा टाइप्स कैन बी कन्वर्टेड प्रमोटेड टू द हायर. तो ये जो है ये डिफॉल्ट कन्वर्शन होता है. तो इंटीग्रल प्रमोशंस ट्राई करता है कंपाइलर अगर मैच नहीं हो रहे आर्गुमेंट्स एंड इट ट्राइज टू मैच देम. अगर ये भी फेल हो रहे हैं देन इट ट्राइज टू परफॉर्म द बिल्ट इन कन्वर्शंस. इवन इफ दिस फेल्स देन इट ट्राइज टू डू द यूजर डिफाइंड कन्वर्शन. और इसमें भी अगर मल्टीपल मैचेस होते हैं तो कंपाइलर फिर एरर मैसेज देता है. ठीक है, अगर इसमें भी मल्टीपल, सो देयर इज बाय डिफॉल्ट इंटीग्रल प्रमोशंस फर्स्ट स्टेज, देन बिल्ट इन कन्वर्शंस एंड देन यूजर डिफाइंड कन्वर्शंस. और अगर इसके बाद भी एरर आता है तो फिर उसमें मैसेज आएगा कि हियर द फंक्शन ओवरलोडिंग हैविंग एन एरर मींस द फंक्शन ओवरलोडिंग वोंट बी पॉसिबल इन दैट केस. जैसे कि एक एग्जांपल देखो, लॉन्ग और डबल. ठीक है, अब ये जो है लॉन्ग इसका रिटर्न टाइप है और इसमें आर्गुमेंट भी मैंने लॉन्ग टाइप की पास की है, और डबल जो है ये भी यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी यही है और आर्गुमेंट भी डिफरेंट है. तो दिस टू आर डिफरेंट फंक्शन. लेकिन अगर इसको ऐसा फंक्शन कॉल जाता है सी स्क्वायर ऑफ 10. अब ये जो इंटीग्रल नंबर है ना ये इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर जो है वो लॉन्ग में भी प्रमोट हो सकता है और डबल में भी प्रमोट हो सकता है, राइट, क्योंकि ये इंटीजर के लिए ये दोनों डेटा टाइप हायर है. सो
अगर ये भी है लॉन्ग तो उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, डबल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ कंपाइलर को एम्बिग्यूटी जनरेट होंगी कि एक्चुअली ये इसमें भी केस में भी मैच होता है और इस केस से भी मैच होता है, एंड हेंस इट विल गिवन बिकॉज कंपाइलर वोंट अंडरस्टैंड विच एग्जैक्टली फंक्शन कॉल शुड आई कॉल टू। ये जो है ये वैल्यू इसे पास करनी है या फिर इसे पास करनी है, क्योंकि दो यू कैन सी दैट इंटीजर टाइप की वैल्यू तो नहीं है, इसे यहाँ नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेगा, इसके इंटीग्रल फंक्शंस ट्राई करेगा। इंटीग्रल फंक्शंस में दोनों केसेस बैठती है, इसीलिए यहाँ कंपाइलर कंफ्यूज हो कि एग्जैक्ट। लेकिन हमारे प्रीवियस फंक्शन में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि कंपाइलर ने जब इसे देखा, ठीक है, जैसे इसे देखा, तो यहाँ पे कंपाइलर को मैचिंग प्रोटोटाइप मिल गया, तो उसे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर कंपाइलर को मैचिंग प्रोटोटाइप अगर ये यहाँ नहीं होता, तो कंपाइलर ढूंढता यहाँ कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स किसके मैच हो रहे हैं, या फिर इंटीग्रल प्रमोट करके देखते हैं, तो फिर उसको वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट करके फिर भी मैच करने की कोशिश करता। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे एरर आ सकता है। What compiler knows to it just searches for the exact match, but it tries to make the integral function and then also tries to match it. Example, question आ गया होगा अटेंडेंस के लिए, मार्क इन कम होगा. So this is a simple example. Look at this. I stream his namespace std. And what I have done before in starting your main function, what you have to write is the declaration part of the function. यहाँ पे हमने क्या किया है, मैं भी अब मैं फंक्शन ओवरलोड करने वाली हूँ इस प्रोग्राम में एरिया नाम का, ठीक है। लेकिन मैं तीन अलग अलग एरियाज कैलकुलेट करूंगी, एक स्क्वायर का, एक सर्कल का और एक रेक्टेंगल। अब इसके लिए मैं हर इसमें अलग अलग टाइप की आर्गुमेंट पास करूंगी, बट मुझे नेम ऑफ द फंक्शन सेम रखना है। सो आई एम गोइंग टू सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। पहला जो फंक्शन मैंने लिखा एरिया, वो मुझे स्क्वायर के लिए लिखना है। आई नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स should be passed to calculate the area of square is 1, because the formula is side square as in here. So what I'm going to do, only one. The second I'm going to calculate the area of R, इसलिए मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया कुछ ऐसे, float area float R। इसमें एक ही आर्गुमेंट जाएंगे रेडियस, क्योंकि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए रेडियस है, बाकी यहाँ फॉर्मूला। उसके बाद तीसरा फंक्शन जो क्या कैलकुलेट करने के लिए मैं डिक्लेयर करूंगी वो होगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगे मुझे, इसलिए मैंने इसमें दो आर्गुमेंट लिखे, इंट एल इंट बी, बोथ ऑफ टाइप इंटीजर। आप यहाँ फ्लोट भी ले सकते थे या कोई भी और ले सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये चीज ख्याल में रखनी है कि तीनों फंक्शन कहीं ना कहीं डिफर हो, भले उनका नाम सेम है, एरिया एरिया एरिया, लेकिन इनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, इनके टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स ये डिफरेंट है। उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद आपको ये है, ठीक है। सो आफ्टर दिस हा मी लेक्चर मध्ये आहे, येऊन जा इकडे केबिनला. हो हो, 10-15 मिनिट. हो हो. अँड द कंट्रोल विल पास हिअर. काल मला एका स्टुडंटने विचारलं की हे असे जे प्रोग्राम्स आहे याच्यामध्ये हा पोर्शन वेगळा आहे हा वेगळा आहे का, आय गेस दीपक. बट सी स्टूडेंट, दिस इज आई हैव मेड पार्टीशन बिकॉज प्रोग्राम अगर मैं इसके नीचे लिखूंगी ना तो वो स्लाइड में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ का प्रोग्राम जो है यहाँ कर दिया। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2 and this is in continuation. Now see here inside main what I am going to write, simply the printing lines, the area of square is, और यहाँ हम डायरेक्टली वो स्टेटमेंट लिख देंगे जहाँ फंक्शन कॉल प्लेस हो रहा है। और मैंने आर्गुमेंट भी पास कर दी, तो यहाँ मैंने ये चीज भी रखी कि मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, बट यू ट्राई टू राइट दिस प्रोग्राम एज एन योर होमवर्क कि आप इसमें यूजर से वैल्यू एंटर द वैल्यू ऑफ साइड फॉर अ स्क्वायर एंड देन प्रिंट द स्टेट। ये प्रोग्राम सबके सबने करके देखना है, ठीक है, कॉपी में।
लिख लो कहीं तो, यूजर से वैल्यू लेके ये प्रोग्राम परफॉर्म करके दिखाना है। उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पास कर दी एरिया ऑफ 2.1। आई विल हैव टू कीप इन माइंड दैट आई हैव टू पास आर्गुमेंट ऑफ टाइप फ्लोट। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए मैंने लिखा है एरिया 3,6। यहाँ भी मुझे ये ध्यान में रखनी है चीज की इंट एल इंट बी दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू। नाउ सी हियर, आफ्टर कंप्लीटिंग द मेन स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू डिफाइन माय फंक्शंस। इंट एरिया, ये जो पहला फंक्शन है ये आप एज इट इज यहाँ लिखोगे, ठीक है। यहाँ आगे फंक्शन सिंपली आपको लॉजिक लिखना है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर रिटर्न एस। सिमिलरली फॉर rectangle, sorry, circle, 3.14 pi r square is the formula to calculate the area of circle. They have return the calculation part of this as a, whenever this function will get called. And third one, area of rectangle, length into breadth. What will happen when this thing is encountered area of 9? So this is going to be matched with these three same function names. This functions with the same name. और इनमें सबसे पहले चेक होगा कि किसकी आर्ग्यूमेंट एक है, ठीक है। तो यहाँ ये पहले दो मैच केस में आ जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज चेक होगी, पेन कलर, तो एरिया ऑफ 9 के लिए जो पहले दो फंक्शंस पास होंगे ना, ये दो होंगे क्योंकि दोनों एक आर्गुमेंट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में जो पास होगा वो ये फंक्शन पास होगा क्योंकि इसकी आर्गुमेंट इन टाइप की है। तो इस तरह से कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप चेक करता है हर चीज, ठीक है। और क्योंकि उसको इन टाइप की आर्गुमेंट और एक आर्गुमेंट वाला एरिया फंक्शन का नाम मिल गया, इसलिए डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पास होगा, इसकी body पे जहाँ ये function लिखा है first statement of this function, and this part will run for the value 9. So 9 will be passed here and 9 will be passed as a value s, and s 9 into 9 will be returned here, and hence the output will appear in your on your screen, that is 81. Similarly जब ये लाइन एनकाउंटर होगी, बता सकता है कि यहाँ आउटपुट में क्या एरर है। अच्छा बस सुन रहा था, कई एरर नहीं है। This is going to be printed ना, बस तसं प्रिंट होईल जे डबल कोट्स मध्ये आणि त्याच्या समोर त्याचा आन्सर येईल. What will happen in the second case? Area of 2.1 मध्ये परत हे जेव्हा फंक्शन एन्काउंटर होईल, फंक्शन कॉल परत या हे दोन्ही फंक्शन्स त्या केस मध्ये मॅच होतील. पण सेकंड केस मध्ये काय चेक केलं जाणार, टाइप ऑफ द डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्युमेंट, आणि त्यामध्ये हे फंक्शनच फिल्टर आउट होऊन पास होईल आणि हे फंक्शन get match. So this will be the exact match for this function call, and hence the control will pass here inside this function body, and here the R value 2.1 के लिए 3.14 into 2.1 into 2.1 कैलकुलेट होंगे। यहाँ ये आंसर सिमिलरली फॉर दिस, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता, यहाँ दो आर्ग्यूमेंट वाला एक ही है, तो यही पहले केस में मैच पास here, and length value will be b, or breadth value will be 6, 8. This is how you perform the function. So I hope you have written this program in your copy. Okay. I will provide this PPT आज मिल जाएगा। कितनी पढ़ाई हुई आप लोगों की? फर्स्ट यूनिट पे टेस्ट रखें, देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो 5 to 6. टाइम फिजिबल है, 5 to 6 PM में एक टेस्ट रखेंगे हम लोग। Shall we start with the next topic?
Classes, objects, and implementation. Class. The next topic. After learning about the functions, you are going to learn in detail how the class is written, how the objects are created, and how the methods are accessed. What things are permitted and what are not. Give me 10 minutes. We will have a quick look at this. These things you already familiar with. In C++, a class is a new data type. It becomes a user-defined data type. And what we write inside a class is that we define the object's attributes and its functions that will operate on those attributes. जनरली क्लास स्पेसिफिकेशन में एक क्लास डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, जहां उसके डेटा टाइप और उसके मेंबर्स का स्कोप डिसाइड होता है, और दूसरी चीज होती है फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब क्लास में जो आप फंक्शन लिखते हो उन्हें आप डिफाइन करते हो, ठीक है, आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लास. What you must learn is this thing. Is it visible to you? See, can we search for more clear diagram? But for now, just try to understand this part. देखो, जब भी हमने प्रोग्राम लिखा था तो आपको याद होगा हमने उसमें प्राइवेट और पब्लिक ये ऐसे स्कोप था. डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? क्लास, क्लास नेम, एंड वी रोट द प्राइवेट स्कोप एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर. तो प्राइवेट का मीन क्या होता है कि दे कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम विदिन द क्लास एंड दिस फंक्शंस ऑफ व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस. एंड पब्लिक का मीनिंग क्या होता है कि दे आर एक्सेसिबल टू द आउटसाइडर्स, मतलब आउटसाइडर कौन हुआ? मेन फंक्शन या बाकी कोई भी फंक्शन. ओके, सो दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स दैट कांसेप्ट. डेटा हाइडिंग कैसे होता है क्लास में, ये डायग्राम बस इतना मैं. देयर इज अ प्राइवेट एरिया ऑफ द क्लास एंड पब्लिक एरिया. तो जो प्राइवेट एरिया है इट इज हैविंग नो एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, बट इट इज हैविंग एक्सेस फ्रॉम द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ दिस क्लास. मतलब क्लास के अंदर का ये क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ खत्म हुई, इसमें आपका पब्लिक एरिया मतलब पब्लिक स्पेसिफायर में जो डेटा फंक्शंस लिखे हैं सिर्फ वही चीज इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास का ही हिस्सा है, पब्लिक एरिया ही हो लेकिन ये क्लास का हिस्सा है ना, तो ये सिर्फ पब्लिक में जो फंक्शंस है वही इस प्राइवेट एरिया में डिक्लेयर किए हुए डेटा या फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, और इनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता अदर देन दिस. So no entry to the private area from outside world. What about this public area? Public area can be accessed from the outside world, means either by the main function or the another function from the different classes. क्योंकि एक प्रोग्राम में एक ही क्लास रहती है क्या? नहीं, एक प्रोग्राम में 10 क्लास भी रह सकती है, 100 क्लासेस रह सकती है, तो बाकी क्लासेस के फंक्शन भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी आउटसाइडर इन्हें एक्सेस कर सकता है जो इस क्लास का पब्लिक एरिया, इसीलिए उसको पब्लिक बनाया ना हमने, ठीक है, ये नाम से आप लोग ध्यान में रखो. तो पब्लिक यानी अवेलेबल टू ऑल, accessible by all. Private means private to that class only, okay, and can't be accessed by the outside world. फिर इनको कौन एक्सेस करेगा? इनको कोई एक्सेस करेगा क्यों? तो हाँ, इस क्लास में डिक्लेयर किए हुए पब्लिक सिर्फ यही इनको एक्सेस कर सकते हैं और बाकियों को डायरेक्टली उनका आंसर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस इनको अलाउड नहीं है. अगर बाहर वालों को इनका एक्सेस चाहिए तो इन्हें इनके थ्रू जाना पड़ेगा, मीन्स इनके थ्रू उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके इसको मिलेगी. जस्ट रिमेम्बर दैट only the member functions, see here, only get data and put data functions can access these two variables, member and cost, and not other than them anyone can access directly these members because they are declared as private. तो बाय डिफॉल्ट जो मेंबर्स होते हैं ना क्लास के वो प्राइवेट होते हैं, तो अगर आप ये वर्ड नहीं भी लिखते हैं सो इट इज ट्रीटेड एज प्राइवेट. अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते तो उसके तो ये जो दोनों मेंबर है ना ये एज एन प्राइवेट ट्रीट होंगे, लेकिन पब्लिक को एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है, ठीक है, कि इसे मुझे पब्लिक बनाना है, लेकिन प्राइवेट जो कीवर्ड है ना ये ऑप्शन मतलब डिफॉल्ट होता है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. ये बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट होंगे? प्राइवेट मेंबर्स, और इनका एक्सेस सिर्फ इसे रहेगा गेट डेटा और पुट डेटा. Once a class is declared, we can have the declaration of its objects.
सी हियर क्लास आइटम, और अगर इस क्लास के आपको ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने हैं ना तो यहीं पे कर सकते हैं एक्स वाई जेड। लेकिन आप बोलेंगे ये हमने तो कभी देखा ही नहीं, तो हमने हमेशा क्या किया है, मेन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये बोलती है कि जहां यूज करना है वहीं पे लिखो, वाई टू कीप कंफ्यूजन, राइट। अगर आपको मेन में ही ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, सी जैसे हम क्या करते हैं, मेन में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आइटम एक्स क्लास आइटम है, इसका ऑब्जेक्ट यही क्रिएट किया, क्यों, क्योंकि यही यूज करने वाली हूँ ना मैं इसको, एक्स डॉट गेट डेटा, एक्स डॉट पुट डेटा। तो यहाँ क्यों लिखे, है ना, ये जो क्लास है खत्म, यहाँ एक्स लिख के क्या करोगे। इसलिए ये परमिसेबल है सिंटैक्स, ठीक है, ऐसे भी चलता है, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर। बट हम क्या करते हैं, जहां यूज होता है ऑब्जेक्ट का नाम वही उसको डिक्लेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली यू नो दिस थिंग्स हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, ये सिंटैक्स आपको पता है। आइटम अगर क्लास है तो उसका एक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और एक्स विल बी ट्रीटेड एज अ ऑफ डेटा टाइप क्लास, एंड इसे हम क्लास वेरिएबल्स बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स को। एंड ऐसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू गिव कॉमा, एक्स वाई जेड ए बी सी कितने भी लिखो। मैम यस, मैम स्क्रीन अवेलेबल नहीं है मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है। कधी सांगणार, कधीपासून नाही दिसत आहे। सेकंड चालू केलं तेव्हापासून नेक्स्ट स्टेज आधीची दिसली ते ना वो प्रोग्राम के बाद में नहीं दिख रही प्रोग्राम। प्रोग्राम पर्यंत होती, प्रोग्राम नंतर नाही। दिसलं होतं, ए इज इट विजिबल नाउ। Yes, नाव ma'am. विजिबल, आधी नव्हतं मॅम, एक पण नाही। हे एक्सप्लेन ये करून नव्हतं झालं रे, आता सांगता का तुम्ही, हे एक्सप्लेन झालं, हे एक्सप्लेन झालं, कुठले होते ते, इथपर्यंत दिसलं मला. कोणाला इथपर्यंत दिसलं ना, मला दिसलं इथपर्यंत. मग यांचा काय प्रॉब्लेम आहे, नाही मॅम, आम्हाला तुमचा दिसत नेटवर्क नाही। इश्यूज असेल। नाही आम्हाला मॅम, नाही दिसत. स्क्रीनच अवेलेबल हो नव्हती। मग स्क्रीनच नव्हती मॅम. मी डोळे स्क्रीनच बंद केले नव्हती. असणार, नाही मॅम, ओकू नका। जागी सांग। Okay, we will stop here. We will start in the next lecture. 12:58 हो गया है. Don't leave the meet. ठीक है, कल हम टेस्ट लेंगे 5 to 6 PM. ठीक है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट रहेंगे, MCQ बेस्ड टेस्ट रहेंगी, फर्स्ट यूनिट प्रिपेयर करना है। मैंने एक लिंक शेयर की है, बट यू कैन गो फ्रॉम द PPTs ऑल्सो, और मैंने आपके इसमें ना नोट्स में थोड़ा चेक किया करो, नोट्स मध्ये जा आणि तिथे चेक करा, तिथे रेग्युलरली PPT फाइल्स किंवा PDF बुक्स पण अपलोड केले आम्ही काही, ठीक आहे, तर नोट्स मध्ये थोडं चेक करत चला, कारण ते त्याचं ना वेगळ्याने नोटिफिकेशन नाहीये, मी अपलोड करत असते त्यामध्ये, पण त्याचं वेगळ्याने नोटिफिकेशन आहे, हे अजून इथे एवढं अपलोड करून झालेलं आहे, की बघा इथे बुक पण अपलोड केली आहे मी, पण ही नाहीये तुमची ऍक्च्युअल बुक, पण यामध्ये जे जेवढं मी शिकवत आहे ते सगळं कव्हर होतं, याच्यामध्ये C++ जावा नाहीये, यामध्ये C++ सगळं आहे। जस्ट गो थ्रू दिस बुक, एंड फर्स्ट यूनिट पे कल टेस्ट रहेंगी दोनों क्लास की, ठीक है, 5 to 6 इवनिंग में, 1 घंटा भी नहीं, उसका कम ही टाइम रहेगा, और उसके बाद मैं उसमें रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट करना स्टॉप कर दूंगी, जो उस टाइमिंग में नहीं देगा उसके बाद उसके रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, टेस्ट यू मे लीव द मीट।